साल 2022 मशहूर गायिका मिस पंजाबी नाथ एतवार 31 जुलाई 2022 सवेरे 11 बजे तो शाम 6 बजे तक फॉक्स थिएटर कैलिफोर्निया विखे करवाया जा रहा है, जिस विच 12 साल तो घट बच्चे की एंट्री फ्री होगी। इस दिन मीडिया पार्टनर हैं चढ़दी कला स्काई टीवी। इस मेले का आनंद माणने के वास्ते अज ही बुकिंग के वास्ते संपर्क करो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा। खबरों का आगाज़ करांगे, पर एक नज़र हुण तक दी हैडलाइंस ते। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मैसाचुसेट्स स्थित पूरब गोला प्लान का कीता दौरा। बाइडन ने जलवायु परिवर्तन नाल नजीठण लई नवीं कार्रवाइयां का कीता ऐलान। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अहुदे दी दौड़ के आखिरी पड़ाव ते पहुंचे ऋषि सुनक। विदेश मंत्री लिज ट्रस नाल होवेगा सख्त मुकाबला। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की गोलक नूं करोड़ों रुपए की सन। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा शाहिद नूं कीता बर्खास्त। गोलक विचों करोड़ों रुपए के गबन और कथित भ्रष्टाचार के दोषां हेठ की गई कार्रवाई। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने समुद्री सुरक्षा योजना के अगले पड़ाव की रूपरेखा लिखी। संघी बजट में $2 बिलियन निवेश भी शामिल। 15 अक्तूबर को होने जा रही ने सरी म्यूनसिपल चोणां लई नामजदगियां का सिलसिला शुरू। लिबरल मैंबर पार्लीमेंट सुख धालीवाल ने सरी के मेयर वजों चोण लड़न का कीता ऐलान। ऋषि सुनक ने बुधवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अहुदे की दौड़ के आखिरी पड़ाव में जगह बना ली है। हुण पार्टी और प्रधानमंत्री के रूप में देश की अगवाई करने लई उन्हां दा मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस नाल होएगा। सुनक ने टोरी सांसदां दे पंजवें और आखिरी दौर की वोटिंग में 137 वोटां नाल जित प्राप्त की, जदों कि दूजे स्थान पर रही ट्रस नूं 113 संसद मैंबरां दा समर्थन मिलिया। ब्रिटेन के 42 साला साबका वित्त मंत्री सुनक हुण तक वोटिंग के हर गेड़ ते सिखर च रहे ने। उन्हां मंगलवार नूं मिलियां अपनी 118 वोटां विच 19 वोटां होर जोड़ियां ਅਤੇ अंतिम प्रदर्शन ਵਿੱਚ जगह बनाने ਲਈ 120 संसद मैंबरों के समर्थन के अंकड़े ਨੂੰ आराम नाल पार कर लिया। सुनक ਅਤੇ ट्रस ਹੁਣ सोमवार ਨੂੰ अपने पहले आमो सामने मुकाबले ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। अमरीकी सैनिक की एक अहम कमेटी ने भारत नाल रखिया साझेदारी ਨੂੰ मजबूत करन ਅਤੇ खुफिया जानकारी इकट्ठी करन, ड्रोन, चौथी ਅਤੇ पंजवीं पीढ़ी के जहाज़ों में ਵਧੇਰੇ सहयोग राही इसनूं नवे पद्धर तक लिजाण का फैसला किया है। सैनिक की शक्तिशाली आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने यह बयान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वालों नैशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट वजों जाने जाने वाला विधानिक सोध पास करने तो एक हफ्ते बाद दिता है, जिस विच काउंटिंग अमरीकाज एडवर्सरीज थ्रू सैक्शंस एक्ट के तहत दंडकारी पाबंदियां तो भारत नूं छोड़ दी गई है। NDAA अमरीका का सालाना बजट है। सैनिक की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने बुधवार को वित्तीय साल 2023 ਲਈ नैशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट का अपना संस्करण पास किया। महत्वपूर्ण गल यह है कि अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने पिछले हफ्ते एक सोध का बिल पास किया, जिस विच भारत को रूस तो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने लई पाबंदियां तो विशेष छोड़ दी गई सी। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन जलवायु परिवर्तन नाल नजीठण लई नवे कार्यकारी आदेशों ते चर्चा करने लई समरसेट मैसेच्यूसेट्स विच एक साबका कोला पावर प्लांट का दौरा करन पहुंचे, जिथे उन्होंने भाषण दिता। अपने भाषण विच बाइडन ने कहा कि वह खुद कैंसर नाल पीड़ित ने। ट्विटर ते जिवें ही बाइडन का यह वीडियो आया तो लोग हैरान रह गए। यूजर्स ने पूछा कि यह बोलने की मामूली गलती है या वड्डा खुलासा। रियल क्लियर पॉलिटिक्स न्यूज वेबसाइट के संस्थापक टॉम बेवन ने अपने ट्वीट में कहा कि जां तां यह राष्ट्रपति के इतिहास का सब तो वड्डा धमाका है जां सब तो वड्डी गलती। स्वतंत्र महिला फोरम के सीनियर साथी बेवरली हालबर्ग ने भी ट्वीट किया। बाइडन के भाषण तो कुछ लोग हैरान रह गए, जबकि कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि बाइडन अपने पिछले चमड़ी के कैंसर का जिक्र कर दिता। इस तो बाद बाइडन अपनी
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। And because it was a 4-lane highway that was accessible, my mother drove us, and rather than us be able to walk. And guess what? The first frost, you knew what was happening. You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer, and why for the longest time Delaware had the highest cancer rate in the nation. ਦੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਿਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਹਦਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਿਸਟਰ ਕਲਿਫ ਲਵ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਮਾਸ਼ਵ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੰਡੋ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਵੇਕੁਈ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ETBP ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ 1,14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ CEO ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2018 ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Canada has some of the most beautiful places in the world, and where we are today is a perfect example of that, with mountains, ocean, fresh air, whales, fish, birds, and all kinds of wildlife. In fact, as Patrick mentioned, the Salish Sea right behind me is one of the most richly biodiverse places on Earth. And I don't have to tell anyone here why it matters that we protect these spaces. Of course, not all governments have always felt the same. Under the previous government, promises to protect our oceans went unfulfilled again and again, with Coast Guard centres closed, with environmental protections slashed, with legislation gutted, and scientists muzzled. So 7 years ago, when our government took office, we knew we had to do something big that was ambitious and that makes sure that Canada is doing everything necessary to protect our waters. So in 2016, we launched the Oceans Protection Plan to protect animals and ecosystems, to make marine shipping safer, to work in partnership with Indigenous peoples and coastal communities. To take just 2 examples here in BC, we reopened the Kitts Coast Guard Station in Vancouver that the previous government had closed. We protected species like the southern resident killer whales, along with 300 other measures across the country. We've done a lot since 2016. Marine species are better protected, shipping is safer, and we've built strong relationships with Indigenous and coastal communities. But now, it's time to be even more ambitious. Today, we are launching the Oceans Protection Plan 2.0 with another $2 billion in funding to back it up as we renew and expand this work across the country, including continuing our work in the Great Lakes and on the St. Lawrence. We'll take action to combat emerging threats to our marine safety and ecosystems, and we'll strengthen partnerships with Indigenous peoples who must be our partners
and in many ways are leaders as we move forward on protecting these extraordinary ecosystems. A good example is the work that we're doing right here together on the Salish Sea strategy. We'll continue to protect and restore this rich ecosystem in a way that respects indigenous and treaty rights and traditional knowledge. And we'll deploy technologies that reduce the impacts of underwater noise so that marine mammals can safely communicate with each other and navigate through these waters. The Oceans Protection Plan 2.0 is about moving forward with new, bold action with partners from coast to coast to coast to protect and restore our oceans. We can't help but feel hopeful when we hear stories like the new baby orca born to one of the southern killer whale families for the first time in over a decade. ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I will be running to be the next mayor of our great city. Surrey is a rapidly growing community and it's a very diverse and dynamic community that have unlimited potential. Our future is bright and I believe working together we can achieve so much more, that we can accomplish much more than what we have seen over the last 4 years. Over the last 4 years, we have seen a divisive politics, unprecedented division, partisanship, no focus on the citizens of Surrey. We will freeze taxes. That will help the people that needs the help now, because we are going through unprecedented uncertainty, whether it's economic, whether it was going through the pandemic. This commitment we will deliver if people of Surrey gives us a chance to be a mayor and council for them. Secondly, there is a hidden $300 tax that is imposed on the parcel. This $300 parcel fees we will restore back to $100 that was prior to this mayor and council that got elected 4 years ago. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਗ੍ਰੈਸੀ ਨੈਰੋਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਸੀ ਨੈਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 90% ਲੋਕ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਸੀ ਨੈਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ हर पद्धति की सरकार ऊपर दबाव भी पाया जा रहा है। लास्ट ईयर जो वो ग्रेव्स का इश्यू बना कैमलूप्स में और दूसरी जगहों पे, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि इंडिजिनस इश्यूज के बारे में हमारी इमिग्रेंट कम्युनिटी और खासकर साउथ एशियन कम्युनिटी में अवेयरनेस कम है। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये ग्रासी नैरोज जगह का मैंने नाम सुना है, वहां बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी सुना है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता और मैं ये लिख रहा हूं कि लोगों को नहीं पता, तो मैं भी उसमें शामिल हूं। मर्क्यूरी एक ऐसी चीज है जिसे बायो एक्यूमुलेट होती है कहते हैं, यानी वो एक बार किसी के बॉडी में घुस गई, चाहे इंसान हो चाहे फिश हो जो भी हो, तो वो फिर वो जाती नहीं है, वो एक्यूमुलेट होते रहती है। जैसे जैसे आप मर्क्यूरी वाला खाना या पानी ले रहे हो तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर माँ के जिस्म से बच्चे के जिस्म में भी जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर ब्रेस्ट फीडिंग में भी। तो 3 जनरेशन से वहां के जो लोग हैं उनके बॉडी में मर्क्यूरी है और ये बड़ी खतरनाक चीज है। यहाँ पर एक टॉप मोस्ट टॉक्सिकोलॉजिस्ट है, उनसे मैंने बात की थी, तो वो तो सुन के हैरान हो गए, बोले इतनी सीरियस चीज है मर्क्यूरी, इतनी खतरनाक चीज है, उससे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, डेवलपमेंट काफी स्लो हो जाती है बच्चों की। 2017 में ओंटारियो गवर्नमेंट ने $85 मिलियन का प्लान बनाया था
कि वहाँ जो रिवर्स में मर्क्यूरी है उसको रिमूव करने के लिए, और उसमें से $30 मिलियन 4 साल में खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं। तो वो प्लान कहाँ है ये जानने के लिए मैंने मेरे एमपीबी प्रवीण सकारिया को लिखा। ये हुआ पिछले साल 4 जुलाई को। आज तक उसका कोई जवाब नहीं है, मैं उसके पीछे लगा हुआ। और जब जवाब नहीं मिला तो मैंने ठान ली कि इसका मैं जवाब लेके और प्लान इंप्लीमेंट करवा के रहूंगा। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट फेलियर है, पॉलिटिकल फेलियर है, मीडिया फेलियर भी है, क्योंकि उन्होंने इतना जोर शोर से उसको आगे नहीं किया इश्यू को, और वोटर फेलियर भी है। और उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। पिछले साल तक मुझे भी पता तो नहीं था कि ये मामला इतना सीरियस है। कुछ है ऐसा पता था, और ऐसा तो काफी लोगों को पता होगा, लेकिन इसकी सीरियसनेस क्या है और इसको हल करना बहुत ही क्रिटिकल है। ये इश्यू के तौर पे अगर हम बनाएं कलेक्टिवली तो फिर आगे उसका असर पड़ रहा है। कि सोनिया सिद्धू को लिखा, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन उसमें लगता है कि वो कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो वो भी इसी रास्ते पे जा रहा है जो ये प्रोविंशियल प्लान जा रहा है। तो मैंने उनको दोबारा लिखा है, अभी तक उनका जवाब नहीं आया कि भाई कंस्ट्रक्शन कब शुरू होना है ये बताएं, क्योंकि आपकी डेडलाइन तो निकल गई। तो ये अवेयरनेस अपनी कम्युनिटी में बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, प्रोविंशियली और फेडरली हम सब जानते हैं कि जो पार्टी 905 में ज्यादा सीट जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और 905 में हमारी कम्युनिटी की वोटर के हिसाब से वेट ज्यादा है। तो अपनी कम्युनिटी में अगर ये अवेयरनेस हो तो हम भी सब उनके पीछे लगे कि भाई इसका कुछ करो। और सीधी सी बात है, जब वोट एट स्टेक आ जाते हैं, बंदे को लगता है कि मेरे वोट चले जाएंगे, मेरी सीट चली जाएगी, तो वो काम करेंगे। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। रिपू दमन सिंह मलिक के बेटे जसप्रीत सिंह मलिक वालों मीडिया नाल गलबात की गई, जिथे उन्होंने कहा है कि वह नहीं मानते कि उन्होंने पिता के इस कतल और 1985 एयर इंडिया धमाके के मुकदमे के नतीजों का आपस में कोई मेल नहीं है। वो इस शूटिंग हादसे को हल करने लई RCMP उत्ते भरोसा रखते हैं। I'm very much convinced this has nothing to do with that. You guys put my dad's name in your computer, that's the first thing that turns up, and so you guys talk about that, and I understand that's your role. But there's no way these two things are related. I'm personally convinced of that, and I mean I hope I'm right in my personal belief in that, because it takes a lot to hate. It takes a lot of energy to hate, and to hate someone for 17 or more years and then to act on hate. I just can't imagine someone like that in the world actually exists, and it's just hard for me to fathom. And so I mean, I struggle to understand that someone like that could even exist. So I don't understand it. I don't believe it to be true. I think this must have some other cause or motive or something. I mean, and again, I don't know what that would be, but I just can't see the two things being related. I mean, my dad is a private individual. He's a volunteer for a number of charities. He runs a private business, which he uses a lot of money to donate to those charities. I mean, he's not a politician. He's not a political figure. You know, someone asked me that yesterday, and again, that just makes no sense to me. You know, I have faith in the RCMP. I have faith they'll figure out who did this, and I have faith that that's not going to be a connection. We understand this is a high-profile international story. However, we urge not to speculate as to the motive, as our homicide investigators will be following the evidence. Our investigators are looking to speak to anyone who was at 8236 128th Street in Surrey, and it is a white Honda C. देखो, विचारां दे बखरेविਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस तरह का वापर जाना ਜਾਂ इस किस्म की घटनावां का वापर जाना ਉਹਨੂੰ कदे भी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ नहीं करते, क्योंकि विचारां ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ हो सकते हैं, अकीदियां ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ हो सकते हैं, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ धर्म ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ हो सकते हैं, संस्कृतियां ਵੱਖਰੀਆਂ हो ਸਕਦੀਆਂ ਆ पर जे किसी व्यक्ति की असीं जान लैने आ, किसी भी व्यक्ति की जान लैन का किसी नूं हक नहीं। सो असीं इहनूं कंडैम करदे आ। एक लेखक होने के नाते मैं महसूस करदा हां कि अज दुनिया दे विच जिहड़ियां वख-वख जबानां दवाईयां जा रहीआं ने, लोकां दे विचारां नूं दबाया जा रहा है, तो उस दबाउण दे भी बहुत सारे प्रतिकर्म हुंदे ने। सो मैं समझदा कि सानूं एक गल सीख लैनी चाहिए है, जानवरों तो सीख लैनी चाहिए है, पशु पंछियों तो सीख लैनी चाहिए है कि विचारां दे वखरेविਆਂ के बावजूद एक समाज में किवें रहना है, अपनी गल किवें कहनी है, तो दूजे की गल नूं सुणन दी साडे च बर्दाश्त दा मादा होना चाहिए है। सो असीं इस कतल की निखेधी करते हैं। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी वर्ल्ड के प्रधान पॉल ग्रोड ने यूक्रेन की रक्षा लई एक रणनीतिक सलाहकार कौंसल की शुरुआत का ऐलान किया है। कौंसल यूक्रेनी बलों नूं रणनीतिक मुहारत और संचालन सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि चल रहे रूसी हमले के विरुद्ध अपनी सरहदां की रक्षा करेंगे। And he asked a question that he'd like to hear the panel's perspective on the decision by the Canadian government to permit the return of repaired Nord Stream 1 turbines to Germany, a decision that has frustrated Ukraine and many of its supporters and allies. Has the federal government miscalculated in allowing this exception to its Russian sanctions? There's a similar question also being asked by Aaron D'Andrea, who also is asking similar question, but relating to just kind of more of an update that there was a report that Gazprom yesterday told its customers in Europe that it can't guarantee gas supplies because of extraordinary circumstances, adding to the fears Russia may not restart Nord Stream 1 pipeline. What do we make of this report? And the government of Canada has been subject of criticism over its decisions to ship repaired turbines Nord Stream 2. So, we're seeing this, pressure from Germany. We certainly saw what seemed to be at least support, if not pressure, from the White House for this decision to happen. Weakening of sanctions, but nonetheless, no guarantees that it's actually going to provide gas to Germany. Perhaps, General Clark, if you want to start off with that, and we can see if General Petraeus and General Hillier would like to comment on that as well. Yeah, Paul, just a few words really, and I'm a slight bit, I think, more harsh on the Canadian government decision, and I wish it had been slightly different, or in fact different, as simple as that. I think maybe we are going to see two things from this, and I'm worried about both. Number one is Russia is going to see this as a sign of encouragement, that there will be decisions made that will benefit them as we go along the route. And the second thing I worry about is that we're now at 6 months. We're in the middle of summer. Inflation is rearing its ugly head in the West. People are coming out of the pandemic and want to travel, and the focus is anything but Ukraine. And this decision to send the turbines back to Germany, would be seen in hindsight as maybe the time when we have now not going like this on sanctions, more and more sanctions to Russia, but in hindsight it may be seen as the straw that broke the camel's back, and we may start to see a relenting of pressure from NATO, from the West in general. I hope that is not the case, but I think we saw after 2014 and the invasion of Crimea and what occurred, that in a very short order, the pressure from the West started to relent, and Russia was not paying the severe price that it had prior. And in this case, I worry in hindsight that the turbine decision might be the trigger that causes that to start occurring now. Instead of going upwards and onwards with more and more sanctions, that this might be the straw that causes it to turn downwards. I'll stop there. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। We have been
seized with the issues at airports with congestions and delays for the last couple of months. And we've been acting. We have adjusted many of our policies to respond to the surge in demand that we're seeing in the travel industry. We've hired CATSA employees, we've increased CBSA's officers, and what else we've done is we've looked at other bottlenecks. And one of those bottlenecks were the COVID testing on the airport premises. So what we've decided to do is to remove that bottleneck from airports and to get these tests done off the premises. And while we worked out the new logistics for that, we suspended testing until we sorted out the new process. So now the new process is back in place where there will be no testing at airports. There will be no selections at airports. The new process is where randomly selected passengers will be done automatically. They will be notified via email, and then they'll do their test off-site, either virtually or at a pharmacy. So it is an improved process that takes into account two things. First, the importance of those tests for the protections of our public health, for the protection of Canadians. Second, to do it seamlessly in a way not to impact the congestions or the flow of passengers and goods at airports. It is really important, again, for Canadians to know that the government is continuously monitoring the COVID-19 situation. We have seen over the last year and a bit how acting too quickly in removing public health measures can lead to a surge in COVID-19 or a reaction with reimposition of new measures. What we are doing, the random testing for international travelers, is an early warning system. It is done in a way to ensure that we are constantly monitoring the type of infections that are being imported to Canada, the type of genome and the type of variants that are coming into Canada, so we can be prepared. It has been proven that over the last year, these public health measures have helped save lives. Canada's death per capita is one of the lowest in the world. One of the reasons for that is because we've had these early warning systems where provincial, local, and other public health agencies were able to react, and the public was able to adjust given the new information that we have. So it is proven over the last year and a bit that these measures are helpful, are necessary, protects lives, and every single life is worth the measures that we're doing, but we want to do them in a way that does not add further congestions at the airports. That's why we've reached this method where tests are done off-sites and where selections is done automatically instead of an individual or a manual selection at airport. ਬਾਥਰਸਟ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਡੰਡਸ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਉਤੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9:20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਥਰਸ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਡੰਡਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।